पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो विज्ञान और प्रौद्योगिकीकरण को लेकर के अनेकों क्रांतिकारी निर्णय लिए गए हैं, अनेकों पाथ ब्रेकिंग डिसीजंस, जैसे अंतरिक्ष को खोल देना फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन, जैसे जियो स्पेशल की नई पॉलिसी लाना, उस कड़ी में यदि आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण, या आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट 2 or 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन इन द लास्ट 9 years of the Modi regime is the launch of the National Quantum Mission. और इसका भारत के संदर्भ में क्या महत्व है और इसका अर्थ क्या है? यहाँ तक हम महत्व की बात करें तो इंडिया टुडे इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट यूटिलाइजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, or other words we can say we are the biggest stakeholders also as far as information technology is concerned. And quantum technology is the one which is essentially related with information processing, which includes the sharing of information, etc., etc. And this is a technology which makes the information processing faster, more authentic, more precise, more secure, and also most authentic. अब ये होता कैसे है? Because I think that is something that we appreciate that, then we would realize the importance. I would rather say in a single sentence that this national quantum mission is going to give India a quantum jump in the world arena. There are only 6 countries so far who have this technology, which means that they are Finland, Austria, France, but they are also in the R&D stage. None of them has actually started the application of it, and therefore we are also going to be at par. पहले क्या होता था, जब भी हम कंप्यूटर के नेक्स्ट लेवल पर जाते थे तो अन्य देश पहले से ही उसको अप्लाई कर चुके होते थे, whether it was GPS, whether it was other means. Here we are now at par. None of them has actually started applying this technology. They are still in the R&D stage, and so also would we be. Now, if you want to take down the names of the 6 countries who already have this, they are the USA, Canada, Austria, Finland, China and France. अब होता क्या है कि जो हम अभी तक आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, because I think the media is one of the greatest stakeholders as far as this technology is concerned. जो हमारा क्लासिकल कंप्यूटर है, that is transistor based, whereas this one is going to be the atom based. तो ट्रांजिस्टर वेव moves, इस तरह से इन वेव्स, लहरों की तरह. अगर आप पुराने ज़माने में शॉर्ट वेव पर खबरें सुने, समाचार सुने तो ऐसे ऊपर नीचे आवाज़ जाती थी. अगर आप विविध भारतीय रेडियो सिलोन के गीत सुने तो ऊपर से आवाज़ कभी गाना ऊंचा कभी नीचे, क्योंकि उसके 2 पड़ाव रहते हैं, 0 and 1, so it hops like this. Whereas here you have multiple states, which in other words may be destination, so it goes like this. So it is more steady, it is faster, and it is much more authentic. So that is one great advantage as far as information technology is, and the speed is much faster. Now how is it more secure? Now again it's very interesting, because जब आपकी encrypted conversation है या messages हैं which you are already using, चाहे WhatsApp कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं, तो उसमें mechanism ये है कि एक public की होती है, एक private की. तो अगर आपको उसको open करना है for whatever reason, so first the server or whoever enters the public key. Now public key is something like a password with 10 digits or whatever. But having entered, then there is a private key which is exclusive to yours. अगर मेरे पास भी क्वांटम है तो आपके पास भी क्वांटम है, तो आपको मैं नहीं छेड़ सकता, आप मुझे नहीं छेड़ सकते. लेकिन अगर आपके पास क्लासिकल है पिछला जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्वांटम वाला उसको कर सकता है. तो ये इसकी सिक्योरिटी है, और इसका हमें फ़ायदा ये रहेगा कि जैसे हमारी गवर्नेंस है इन वर्चुअली इन एवरी सेक्टर, हमारे गवर्नेंस के सेक्टर में नाउ वी आर यूजिंग ऑल दी ऑनलाइन पैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, वी आर यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर्स. उसका खतरा रहता है कि कभी आगे पीछे हो जाए. इसी तरह से मेडिसिन, हेल्थ केयर, लास्ट ईयर ओनली प्राइम मिनिस्टर हैड इनॉग्रेटेड हॉस्पिटल इन मोहाली. सो वी हैव radiation technology which precisely hits the smallest cancer cell. नहीं तो आपने देखा होगा so much of side effects of radiation, which doesn't happen here. Similarly, in experimentation, because of this atom-based technology, because the atom is something which is about 360 crores smaller than human beings. It's such a small bit. So since it is functioning through those small bits, the preciseness also increases.
इसके अलावा ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी, आत्मनिर्भर भारत का भी इसमें कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है. And I think this is one of the best instances of what Prime Minister Modi keeps reiterating and emphasizing, the whole of government concept. In the sense there are 5 or 6 ministries involved in this, the Department of Space, Department of Atomic Energy, MITI, DOT, and of course Department of Science and Technology. And therefore this is going to be a huge leap forward, and it's going to give India an edge over the other countries. इसमें अगर आप टाइमलाइन भी जानना चाहते हैं, सो आई थिंक ऑफ कोर्स माननीय मंत्री जी ने आपको बताया जो इसकी इम्प्लीकेशन की है, बट जो इसकी रेंज है वो हम इन फेजेस में ही कर पाएंगे. दैट मीन्स अप टू 1500 किलोमीटर इन 3 years, अबाउट 2000 किलोमीटर्स इन 5 years. सो वी गो ऑन इंक्रीजिंग द रेंज, and of course that will be satellite based. But we also have something like within our friendly communication centers, 2 centers, one is yours, one is mine, so we can communicate with each other. That is about 2000 kilometers. And the other interesting aspect is that within cities also it can be used using the same optic fibers. एक तो सैटेलाइट बेस है विच इज़ गोइंग टू बी ऑफ अ लार्जर रेंज, बट अगर हमने शहरों में करना है तो ऑप्टिक फाइबर की जगह इसके थ्रू ट्रांसमिशन, एंड दैट ऑल्सो वी लुक फॉरवर्ड टू कम्प्लीश 300 किलोमीटर इन 3 years, 500 kilometers in 5 years, and 2000 kilometers in about 8 years. And we also look forward to scaling up, क्योंकि इसका जो यूनिट है of the scale is in the form of qubits. So we target about 50 qubits in 3 years, about 5,000 qubits in 5 years, about 1,000 qubits in 8 years, so on and so forth. And of course also in navigation, जो हमारे ship movement and the other places, because earlier on when you didn't have all these technologies, you depended on lighthouses about 200 years ago. So lighthouse concept khatam ho gaya. Now you depend on GPS and other things. Now this will be the latest. So by all means, this is going to place India as a frontline nation as far as information technology is concerned. And information technology has relevance in all these fields, and not only information technology, it also healthcare and other sectors, the magnetometers, the diagnostic aspects of it, the therapeutic aspects of health, and of course the security aspect. So इसके अतिरिक्त कुछ और जानकारी होगी तो we will be happy to interact with you.